औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाउंड्री शॉप में आज हमारा टॉपिक है हैंड मोल्डिंग टूल्स। वो टूल्स जो फाउंड्री शॉप में इस्तेमाल होते हैं, हर ड्राइंग के साथ उसका नाम लिखा है, साथ साथ आपने अब ये सारे टूल्स इनकी ड्राइंग भी बनानी है और आपने इसको की थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन लाइनों में इनकी डिटेल लिखनी है। तो शुरू करते हैं हम शावल से। इट इज़ यूज्ड for mixing and tempering the molding sand. Sprinkler. It is used for wetting down and tempering the mold sand. Riddle. It's made of rectangular wooden frame with a wire mesh bottom. It is used for removing foreign material such as nails, metals, splinter of wood, etc. from the mold sand. Bench rammer. It is a wooden tool used for packing or ramming the sand in the mold. Strike of bar. The strike of bar is a piece of metal or wood with straight edge. It is used to strike the excess sand at the top of the cope or the bottom of the drag. कोप जो होता है स्टूडेंट्स, ये मोल्ड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ड्रैग नीचे वाला हिस्सा होता है। वेंट वायर. A vent wire is the tool used to make a series of small holes called vents for this purpose over the mold. Trowels. Trowels are used for making joints and finish flat surfaces of the mold. Slicks. Slicks are small tool used for repairing and finishing mold. Lifters. Lifters are used for patching deep section of the mold and removing loose sand from pockets of the mold. Sprue pen. A sprue pen is a tapered pug which mold the vertical passageway along with which the molten metal enters in the mold. Swab. A swab is made of flax or hemp and is used to paint water on the corner of the mold before the pattern is removed, and also this helps to prevent the mold from breaking while the pattern is being drawn. Draw spike. A draw spike is a pointed piece of steel which is stabbed into the wooden pattern. It is used to lift the pattern from the sand mold. Rawhide mallet. It is used to loosen the pattern in the mold so that it can be withdrawn without damage to the mold. Blows. It is used to blow loose sand out of the mold. Gate cutter. It is a small piece of metal used to cut the opening that connect the sprue and runner with the mold cavity. This opening is called gate. तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक था हैंड मोल्डिंग टूल्स, असाइनमेंट के तौर पे आपने इसकी अपनी नोटबुक में इनकी ड्राइंग भी बनानी है और साथ इसकी डिटेल जो अभी मैंने आपको बताई है ये आपने लिखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।